Hello everyone, myself Danish Sheikh. Welcome to the first lecture of PLC and SCADA, and today we will be learning about what is PLC. But क्या आप जानते हैं PLC क्या होता है? नहीं ना, मैं बताता हूँ. PLC stands for Programmable Logic Controller. ये एक तरह का स्पेशलाइज्ड डिजिटल कंप्यूटर है जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है. ये अलग तरह के इनपुट्स को लेता है और हमारे यूजर ओरिएंटेड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके उसको आउटपुट को कंट्रोल करता है. And it acts as the brain of the automation system. It takes inputs from sensors, push buttons and switches, and with the help of the user oriented program it controls outputs like valves, alarms and lamps. PLC में दो तरह की memories होती है, RAM memory and ROM memory. RAM memory stores the temporary user program and the ROM memory it is used to store the operating system of the PLC. PLC का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वो काफी ड्यूरेबल होता है, जिसकी वजह से हजार्डस कंडीशंस में ह्यूमंस को वहां पर ना जाना पड़े और वो उसको रिमोटली कंट्रोल कर सके. एंड बाय यूजिंग पीएलसी इन आवर सिस्टम वी कैन गेट हायर स्पीड एंड वी कैन गेट आवर वर्क डन विद बेटर एक्यूरेसी. यूजुअली दो तरह के पीएलसीज अवेलेबल होते हैं, फिक्स पीएलसी एंड मॉड्यूलर पीएलसी. फिक्स पीएलसी में ये होता है कि जो नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर सेम, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, whereas in modular PLC the number of inputs and outputs can be changed as per our requirement. Comment about your favorite part about PLC and we will get it covered for you. Also like and share this video as much as possible, and for such more content subscribe to our YouTube channel. And if you are looking for job opportunities in PLC and SCADA, click on the link in the description, and for more such content visit our YouTube channel.